Hello students, so this is culture media topic and it is the second part which is continued. Now is the differential media. Differential media, that means it differentiate two groups of bacteria by using an indicator. For example, McConkey agar. It consists of, there is a hint I will like to give to you to memorize this McConkey agar constituents. It is called as plant. So for P for plant, P for peptone, L in the plant represent lactose, A agar, N neutral red as an indicator, and T taurocolate. So this plant plant is the mnemonic for the constituents of McConkey agar to learn it. So uses are for the isolation of intestinal gram-negative bacilli, to differentiate lactose fermenting, that is the pink colonies, from the non-lactose fermenting colonies, that are the pale colonies. And it is also identified as an indicator media. Sterilization, it is done by autoclaving. Now we are going to study cysteine lactose electrolyte deficient agar. This is also called as CLED. सो लेबोरेटरी में बेसिकली फॉर द यूरिन कल्चर के लिए हम स्पेसिफिकली रिकमेंड करते हैं सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार. ठीक है, ये लेस इनहिबिटरी होता है देन द मैकॉन्की अगार एंड सपोर्ट करता है द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव cocci like enterococcus and candida species. So it can also be a differential media as it helps to differentiate between lactose fermenting or non-lactose fermenting bacteria. And moreover इसमें हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी इजीली ग्रो कर जाते हैं एंड स्पेशली इट प्रिवेंट्स करता है द स्वॉर्मिंग ऑफ प्रोटियस. प्रोटियस इज अ स्पीशीज जिसमें स्वॉर्मिंग देखी जाती है like the waves in the swimming pool, we can call it. In the Proteus species, Proteus is a kind of a bacteria. It is for MBBS second year freshers, जिसके लिए मैं mention करी हूँ. Proteus is an organism. It is a bacteria basically. So now uses, it is, I have already mentioned it, that it is used for the isolation of bacteria from the urine. It helps to differentiate lactose fermenting and the non-lactose fermenting colonies. It is used as an alternative to combination of blood agar and McConkey agar, and the sterilization is done by autoclaving. ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं इंडिकेटर मीडिया. तो अब इंडिकेटर मीडिया क्या होता है? इंडिकेटर अपने आप से ही बता रहा है कि वो कुछ इंडिकेट करता है, राइट? तो ये इसमें एक इंडिकेटर प्रेजेंट होता है जो कि चेंज कर देता है कलर व्हेन द ऑर्गेनिज्म ग्रो करे. तो जब ऑर्गेनिजम्स उस मीडिया में ग्रो करता है तो वो मीडिया का कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें डिपिक्ट होता है कि इट इज कॉल्ड एज एन इंडिकेटर मीडिया और ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो किया है. फॉर एग्जाम्पल मैकॉन्की अगार, न्यूट्रल रेड, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू द निमोनिक. रिमेंबर प्लांट पी से हमारा हो गया अपना पी से हो गया पेप्टोन, एल से हो गया अपना लैक्टोज, ए से हो गया अगार, एन से हो गया न्यूट्रल रेड एंड टी से टोरोक्लेट, राइट? सो न्यूट्रल रेड इंडिकेटर इज प्रेजेंट in McConkey agar, which helps to differentiate between lactose fermentation, which turns the pH acidic, and thus pink colonies are formed. And there is another media which is also an indicator media, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम टेलुराइट अगार. इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम टेलुराइट होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है टू मेटालिक टेल्यूरियम, एंड जिसके कारण कॉलोनीज प्रोड्यूस होती है, ब्लैक कॉलोनीज प्रोड्यूस होती है, ब्लैक कॉलोनीज ऑफ कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब बेटा हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया. सो ट्रांसपोर्ट मीडिया बेसिकली होता क्या है, जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करता लेकिन वो वायबल स्टेज में रहता है, दैट मीन्स लाइव स्टेट में रहता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल Stewart's transport media, it is used for an bacteria gonococci. Buffered glycerol line is used for an enteric bacilli, and Venkat Raman Ramakrishnan media is used for an Vibrio cholerae. Okay, now sugar media. So what is the sugar media? It is used to determine the ability of an organism to ferment specific carbohydrate to produce acid. That means एक organism की एक एबिलिटी होती है कि वो एक कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर दे जिसके कारण एसिड प्रोड्यूस होता है. और इस मीडियम ने जो दिस इज अ वाइवा क्वेश्चन बच्चों, कि भाई इस मीडिया में जो इंडिकेटर यूज्ड होता है उसको हम कहते हैं एंड्रेड्स इंडिकेटर. और इसी
में एक इन्वर्टेड डरम्स ट्यूब पड़ी होती है, जिसमें अगर गैस फॉर्मेशन होती है तो डरम्स ट्यूब में यू कैन सी द बबल। ठीक है, अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? इसकी कॉम्पोजिशन बेटा क्या होती है कि पेप्टोन वाटर होता है और 1% शुगर होता है। शुगर कैन बी एनी, इट कैन बी ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। बेटा इसमें ना मैं आपको ये पिक्चर में डिपिक्ट कर रहा है, इसके नाम से ही कलर कोडिंग है, ये चीज याद रखना। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है तो जी से ग्रीन, तो वो जो आपका मीडिया है उसके ऊपर ग्रीन कलर का मार्क लगा होगा। द लैक्टोज है, इट इज काइंड ऑफ इन लाल, तो रेड कलर का होगा। सुक्रोज ब्लू, मैनिटोल इज पर्पल। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज टू आइडेंटिफाई सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Beta, here you can see that there is a sugar fermentation media in which there is a tube, and the ये जो media है basically ये बना हुआ है with the peptone and 1% of the sugar, and there is a presence of an inverted Durham's tube you can see, and so this is, and it changes into basically yellow color due to the production of an acid. Now, beta, we are going to discuss the blood culture media. So it is very important in case of sepsis, or if the patient is like having an high grade fever, patient is in septicemia, so we go for the blood culture, or in case of infective endocarditis too. Right? So blood culture media में क्या होता है? It is two type. First is monophasic media, second is the biphasic media. So first of all, we are going to discuss in this slide the monophasic media. So the monophasic media, there it can be of many types. For example, brain hearth infusion broth, glucose broth, trypticase soya broth, and bile broth. So these are the broths, and it is used for blood culture in case of pyrexia of unknown origin, enteric fever for salmonella में, and it is basically blood culture is taken in the first week. and बच्चों इसका निमोनिक पता है क्या होता है? मैं आपको सिर्फ अभी जनरली बता रही हूँ। एंटेरिक फीवर में जैसे हम लोग ने एक निमोनिक यूज करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, उसको कहते हैं हम बासु। बी से होता है फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर, सेकंड वीक में एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन, एस से होता है स्टूल कल्चर, यू से होता है यूरिन कल्चर। सो फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर इज अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द salmonella infection, and blood culture can also be done for the septicemic patient, as I have already mentioned you. So what is the basic media present in it? It is 50 ml of this broth plus 5 ml of the blood under the aseptic conditions we take, that is 10:1 ratio, right? So subcultures are done periodically in 1 week, and there can be higher chances of contamination, right? So सबकल्चर्स इसमें 1 वीक के बाद करते हैं और इसमें हायर चांस होता है कंटामिनेशन के। Now we are going to discuss the biphasic media, उसको हम कैस्टनीडा मीडिया कहते हैं। इसमें ना लिक्विड फेज में ब्रेन हार्थ इन्फ्यूजन ब्रॉथ होता है, और जो सॉलिड अगार बनी हुई होती है वो ब्रेन हार्थ इन्फ्यूजन अगार होता है। ये ब्रुसेलोसिस के केसेस में भी बेसिकली प्रेफर टू टेक इन कैस्टनीडा मीडियम, एंड सब कल्चर कैन बी डन जस्ट टिल्टिंग द बॉटल ऑन द स्लाइड अगार स्लोप। सो इसमें लोअर चांस ऑफ कंटेमिनेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी ग्रोथ होती है, जैसे ही आप इसको लिक्विड को स्लोप के ऊपर करोगे, so there will be, after incubation there will be growth on the slope, and it reduces the risk of infection of the hazardous bacteria to the laboratory staff. So this is the advantage of biphasic media, that is the castaneda medium over the monophasic media. So this is also a kind of a viva question. So beta, this is the castaneda this is a conventional blood culture media which is used for the brucellosis. So you can see there is an BHI agar and there is a BHI broth. So both biphasic, that means both kind of broth as well as agar is present in a single conventional blood culture media. So these are beta semi-automated blood culture media. So this is the pictorial presentation of that, so you can recognize the bottles easily. So these are the automated blood culture medias. These are the blood culture bottles which we, after the inoculation into the media, we put it in the Bacti alert system, and then we wait for the bottle to get flagged. So after that, the staining and the culture is done from the positive bottle. Now Sebrose dextrose agar. So Sebrose dextrose agar, it is used for growing fungus, and the pH of it is approximately 5
0.0, and molds like aspergillus take weeks to grow, but the yeast like Candida grow in 24 to 48 hours. Antibiotics like chloramphenicol and gentamicin can be added to inhibit the growth of the bacteria. So this is also a Viva question. But now we are going to discuss the anaerobic media. So anaerobic media, there is a thioglycolate broth, nutrient broth with 1% thioglycolate. So जो thioglycolate होता ना, ये act as a reducing agent, right? So it helps you utilize the oxygen and thus creating an environment of anaerobiosis so that the anaerobic bacteria can grow in it. So this is the Robertson cooked meat media, and the principle is the chopped beef heart meat is which provides the unsaturated fatty acid and hence utilizes the oxygen. It also provides glutathione and cysteine, which acts as a reducing agent, and therefore it provides strict anaerobiosis surface of the media, and Robertson cooked meat media surface can be covered with the liquid paraffin. It is also used for the maintenance of stock culture. So beta see, this is a diagram which is showing a test tube with an there is a meat particles beneath, and there is a broth, and this upper light layer is the liquid paraffin, which is creating an anaerobic environment, which is sealing the surface since to get exposed to the oxygen, right? So this is the pictorial, or this is the picture which is showing the Robertson cooked meat media.